गुड मॉर्निंग, जय हिंद। संडे का न्यूज़पेपर है मेरे पास, हिंदू 12 नवंबर दिल्ली एडिशन। क्या कह रहे हैं? दृष्टि आईआईए साहब ने अपना ऐड डाल दिया है, बहुत बढ़िया। 1 वोटर 2 स्टेट्स 2 वोट्स। ओके, सम फ्लॉज। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेन चीज़ों पे बात करेंगे। आपको न्यूज़पेपर से यू शुड ट्राई टू लिंक न्यूज़पेपर से 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ योर वोकैब। So if you see any word that you don't know, don't leave it. Do not, rush through it. आप उस वर्ड को गो टू गूगल, और अगर आपके पास डिक्शनरी है इन द हैंड, गो टू द डिक्शनरी, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड देन ओनली मूव अहेड. Building vocabulary is the first thing towards building your command over the English language as such. पता नहीं फर्स्ट पेज बहुत इंटरेस्टिंग नहीं बनाया इन्होंने, हिंदू वालों ने, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो कोई नहीं, इनका एडिटोरियल मुझे बहुत पसंद है, तो इसके एडिटोरियल पे चलते हैं, देखते हैं क्या इनके टॉपिक्स हैं। ये वाला टॉपिक तो चलता ही रहेगा इनका, जो है समथिंग, ये पीएम मोदी साहब ने बोला है कि जो ये मदिगाज हैं, आई थिंक ही इज़ इन आंध्र प्रदेश, एड्रेसिंग इन हैदराबाद, यस। तो टेक द फाइट ऑफ लॉजिकल कंक्लूजन कैन इंश्योर सोशल जस्टिस इन द कंट्री एंड तेलंगाना। ये एक नई चीज़ चल रही है, कोटा में कोटा, कोटा में कोटा, कीप एडिंग कोटा, कीप गिविंग रिजर्वेशन। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट काइंड ऑफ वेलफेयर स्टेट वी आर बिकमिंग एंड व्हाट विल हैपन टू द पीपल हु आर नॉट इन कोटा। उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। जैसे कि जितने भी विदाउट कोटा वाले जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उनके पास दे डोंट हैव प्लेस टू कीप द मनी। ऐसी बातें हो रही हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ये। और किसी का भला हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि सम कम्युनिटी इज़ गेटिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदा, नथिंग इज़ हैपनिंग ऑन ग्राउंड। सचिन पायलट साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब ये हैं पायलट साहब हमारे, व्हाट इज़ ही डूइंग, आई डोंट नो। बीच में कहते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा, फिर जाते भी नहीं हैं। वहाँ गहलोत साहब से भी चिपके हुए हैं, अपना एक ग्रुप बना रखा। आई डोंट अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी प्लान प्लीज़ पुट इट, और यू डोंट कीप टॉकिंग अबाउट इट। वेट्स विद बेटेड एज इट कीप स्टेट विद द एनुअल दीपावली टेस्ट। आज दीपावली होने वाला है, आप गवर्नमेंट ने बोल दिया है नो पटाखास। उनके पास एक ही सोल्यूशन है, पटाखे मत जलाओ, पटाखे मत जलाओ। एक इनका ये सोल्यूशन है, और दूसरा इनका होता है कि ऑड इवन, बस ये है। दिस इज़ व्हाट दिस गवर्नमेंट थिंक्स एंड डज। कोई कंक्रीट लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, ना इनके पास होगा, बिकॉज दे आर द पीपल हु हैव नो थॉट प्रोसेस, ज़ीरो थॉट प्रोसेस। इन सब चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इन चीज़ों को आप पढ़िएगा ज़रूर। हम चलेंगे सीधा एडिटोरियल पे, बिकॉज वहाँ पे है कंक्रीट। जो आपको एनालिटिकल रीडिंग की मैं बात करता हूँ, वो वहाँ पे है। ये देखिए, 3 लाख पीपल टर्न फ्रॉम प्रो पैलेस्टीन लंदन रैली। तो कहाँ से 3 लाख लोग आ गए लंदन में, ये बड़ा सोचने की ज़रूरत है। कौन है ये? अदर्स कैरिड फ्री पैलेस्टीन, स्टॉप द मैसेकर, स्टॉप बॉम्बिंग गीज़ा। ठीक है, तो now this thing is building up slowly, Israel is probably going too far. अब आप क्या कहें, वो who is correct and who is not correct, but in none of the cases killing civilian is a good idea. So I don't know how it should be done, but definitely killing civilians should stop. Now have you come to the editorial already or not? साइंस पे कुछ आ गया, क्या है? यूनिवर्स में हैव रिजल्टेड आउट ऑफ अ बिग बाउंस, बिग बैंग की जगह बिग बाउंस कुछ कह रहे हैं ये। नहीं, इनको नहीं हम पढ़ेंगे अभी। ये कौन साहब हैं? मार्श फ्लेड द बॉलर्स ऑफ द पार्क। मार्श हरिकेन, अच्छा ये बांग्लादेश को कल। ऑस्ट्रेलिया ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे इस वर्ल्ड कप में एकदम से बाउंस बैक कर गई, कहीं वर्ल्ड कप ना ले जाएंगे। हर बार यही कर देते हैं ये लोग। इंडिया को बहुत संभल के खेलना पड़ेगा, ये नहीं कि हम जीत रहे हैं और इस चक्कर में क्या हो कि मेन क्रूशियल मैचेस में हम हारने लगे। ये भी हो सकता है, तो ख्याल रखने की ज़रूरत है। हाउ मेनी पीपल हैव डाइड इन गाजा? माय गुडनेस, so many people are dying. This is the map of Gaza, as I can see. This is what they are calling it as North Gaza, and this is Gaza city. Okay, and look at the state. This is the bombing where it has taken place.
This is South Gaza. My goodness, so many people. Such a tragedy. Acha, there is another city also in this, Khan Yunis city. This is Khan Yunis, this is Rafah, and this is middle area, and this is north. I don't know how is this area being managed. Look at this picture, so terrible. Something needs to be done. न्यू शरीफ इन टाउन, हाँ, इन भाई साहब को देखिए, ही इज़ पीएम नवाज शरीफ साहब. बहुत दिनों तक ये लंदन में थे, एंड नाउ ही हैज़ कम बैक टू पाकिस्तान एंड बैक इनटू द politics. A former three-time prime minister who came back from self-imposed exile in London has daunting task ahead, from tackling the corruption case against him to steering his party to victory in February's polls. Nawaz Sharif is primarily known for his corruption charges, if I'm not wrong. His brother Shahbaz Sharif was the prime minister for some time. They went to a very, Pakistani economy has taken a nosedive to the extent of, people have stopped giving them loan also. So it is a really bad situation. How he will do, what he will do. He first 3 times, 90 से 93, 97 से 99 and 3 times रहे हैं, but full term इन्होंने शायद कभी भी नहीं किया है. Initially he lived in Saudi Arabia after being dispersed in a coup, charged with treason over hijacking of General Pervez Musharraf flight. इन पर ट्रेजन का चार्ज लगा दिया था. अगर वहाँ रुक जाते तो हो सकता है इनको लटका भी सकते थे. जियाउल का टाइम था 1970s में. उसने 30 ईयर. नवाज शरीफ वॉज अ बिजनेस मैन लर्निंग द लूप्स ऑफ हिज फादर कंपनी, एंड द इत्तेफाक स्टील कॉग्लोमेटोर इनकी फादर की कंपनी थी. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इनकी, नो नीड टू टॉक मच अबाउट हिम एज ऑफ नाउ, बट ओनली थिंग इज ही इज बैक टू द जिस्ट पढ़ लेते हैं. In India, Nawaz Sharif is remembered for many efforts he has made to reaching out, only to be reversed by the military. Basically, he as a person or as the government has tried to reach out to India, but military ने उनको his invitation to, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर भी बुलाया था. आपको याद है, एक बस गई थी, उसमें देवानंद साहब वगैरह बहुत सारे जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे वो भी गए थे, और उसके जस्ट बाद कारगिल वार हो गया था. So he's trying in his way. In fact, Narendra Modi Sahab also once on his return trip landed in Islamabad, and then he went to meet him in his residence. Who is this? Rashida. हाँ, इनका एक बड़ा वीडियो मैंने कल देखा था. शी वॉज स्पीकिंग अबाउट द ह्यूमन राइट्स. इन अ रेयर मूव, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव November 7 passed a motion to censure against one of its members. It voted this to censor Rashida Tlaib, a 3-term Democrat politician who represents Michigan 12th Congress. Only 25 members है. 25 लोगों में से इनका नाम आ गया, इनको सेंसर कर दिया गया है. One of only 3 Muslim lawmakers in America, even in the House of heavily polarized, moved by Republicans, received signal. Okay, this is the second time has faced her comments on. She made her comments on Israel wars on Gaza. The first one, okay, defended the slogan clarifying their aspiration call for freedom. She was giving a very good speech, and इनके बगल में एक और lady थी. She was also talking about it. So yes, now of course she is feeling the sentiments, but she has been censured. So I believe she will not be allowed to attend the parliament now. Where was she born? Palestine. अच्छा, born in December to working class Palestinian immigrants. अच्छा, इनके father parents जो थे वो Palestinian immigrants थे जो US चले गए थे, and entered politics in 2000, has been a member of Congress since 2009. On Israel-Palestine, he supports a one-state solution as well as boycott, divestment, and sanctions movement against. She's basically against Israel, and US is predominantly against Palestine or with Israel, you can say. Glenn Maxwell की पारी, 291 for 5. What a resilience. आप इस शब्द के बारे में भी पढ़ सकते हैं. Resilience एक personality trait है. कैसे इन्होंने, how could he manage this? And then it shows कि nothing is
impossible. Wow. 201 में 128 balls, 21 fours, 10 sixes, chasing Afghanistan, and he came 291 for 5. Australia was sinking 91 for 7. And from there, what an impossible feat. Amazing. The duo 202, who was his partner? I'm forgetting his name. Pat Cummins. पैट कमिंस के साथ 202 नॉट आउट की क्या पारी खेली. ऐसे ही जोरदार, ऐसा ही कपिल देव साहब ने भी खेला था अनबीटन 175 अगेंस्ट जिम्बाब्वे ड्यूरिंग 1983 वर्ल्ड कप. वो मास्टर स्ट्रोक. आपको ये भी जान के खुशी होगी कि ही इज मैरिड टू एन इंडियन गर्ल, इंडियन ओरिजिन गर्ल. कुछ दिनों पहले फोटो भी थी उनकी कहीं, मैंने देखी थी. अमेजिंग. If you see now, Australia and India look like natural allies. ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया ना एक दे आर लाइक नेचुरल एलाइज. एंड यू मस्ट हैव कम टू नो अबाउट दिस ग्रुप कॉल्ड क्वाड. तो क्वाड में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, एंड इंडिया है और जापान है. तो इनका एक यूनियन भी है. एंड दे डू अ एक्सरसाइज कॉल्ड मालाबार, विच इज़ अ नेवल एक्सरसाइज विच इज़ डन ऑफ द कोस्ट नहीं, बे ऑफ बंगाल में करते हैं. सो 9 out of 9. आज मैच है इंडिया का विथ नीदरलैंड्स एंड होपफुली आई एम श्योर मेरे को चिंता अब न्यूजीलैंड वाली है जो सेमीफाइनल आने वाला है. पाकिस्तान आपको पता ही है बाहर हो गया. और साउथ अफ्रीका का जो है अब होगा ऑस्ट्रेलिया से. दिवालिशियस ट्रीट अमूल सबको टेस्ट दिया सिद्धि बड़े अच्छे अच्छे फ़नी बनाते हैं. सबको टेस्ट दिया ले लिया इन्होंने दिवाली से, तो सबको टेस्ट दिया अमूल ने, ये कह रहा है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. एंड नाउ व्हाट, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ. न्यूज़ इन फ्रेम्स देखिए क्या हाल है. एज ऑफ नाउ दिल्ली का स्मॉग ने घेर लिया है. अरे बाप रे, रियली बैड. दिस इज व्हाट पराली बर्निंग एंड ऑल दैट दे कीप सेइंग. So that's all. And I'm sure you liked it. We'll also try to cover the Indian Express one. Just give me 2 minutes. Just take a pause. So I have this opinion page on Indian Express of 12th November. Indian Express. P. Chidambaram is talking about economists have pointed out that private investment, private consumption and exports have stalled. Now, of course, P. Chidambaram will speak against the government and its policies. So there are ways and means to accelerate. उनका कहना है कि sports जो हैं वो कम हो गए हैं. And he is saying कि government is in denial. Economy is in distress. That is what he was economic minister, finance minister, what they call it. So इनका ये मानना है. What are the top 2 concerns according to him? That we should know. Let's see what is his opinion. He is giving some opinion, at least listen to him. Top 2 concerns he says is price rise and unemployment. Thanks to rising price, every family except the rich say top 10% find it difficult to balance the household budget. All India Consumer Price Index that stood at 112 has rose to 174. Some figures he is telling. Smaller packages for the same price to retain brand loyalty. Something he's saying. What else he's saying? Number of government jobs has declined by 22% under the present government. Okay. And unemployment rate among graduates is 42% according to this. And among youth is 23. Okay. Unemployment rate बढ़ गई है. 3 engines stalled. What is this he's talking? That the engine of government investment alone seems to be working, while private investment, private consumption and exports. I definitely disagree with this. He is presenting the fact, or rather we can say he's twisting it according to his desire. I believe economy is an upswing. There was a report by World Bank also that other day we were discussing, and now GDP is growing. India has become the investment hotspot, I'll say. All other companies like Apple, Samsung, everyone is opening the factory here. They are preferring India over China.
So that is actually a good thing. So this is a politicized analysis, I'll say. I'll not agree to it. Zanzibar for centuries home to Indians, now an IIT. क्या है ये? अच्छा, एक IIT खुला है, बहुत important है ये कि IIT Madras found its first home abroad in a small archipelago. Archipelago समझते हैं आप लोग? छोटे छोटे आइलैंड्स का जो नेशन होता है, जैसे इंडोनेशिया इज एन आर्चिपेलागो. So one of them is coast of Africa is hardly Zanzibar, a semi-autonomous Tanzanian province, shares historical links with India that go as back in time as 16th century or even further. Indians did not just form a robust diaspora community. Indian community has Zanzibar में, and prosperous, politically active social scientist in a paper published in Nottingham Press has suggested traders from India along those from Persia and Arabia had commercial link with East Africa coast that has bank. आपको पता होगा कि जो इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे ना, तो अगर ऐसे मैप है इंडिया का एंड देन फिर इधर हम जाते हैं तो ये अरबियन कंट्रीज आएंगे और फिर ऐसे ऐसे करके और इधर जाके अफ्रीकन कंटिनेंट आ जाता है. तो ये ट्रेड रूट होता था ऐसे. ओपन सी में तो नहीं जा सकते थे, इट वॉज टू लॉन्ग, बट देर यूज टू बी अ ट्रेड रूट. दैट इज वॉट शी इज टॉकिंग अबाउट. So that's a very good thing. IIT Madras has opened its, branch, or you can say one. So the Indian diaspora in Zanzibar, there were about 1,000 Indians, mostly from peninsular Gujarat, say maximum, adjacent Kutch, okay, plus okay. Now, India ने बहुत इन्वेस्ट किया है. Bitter and long-term emerge was carried out among colonial policies regulating the clove industry. वहाँ पे clove बात होता होगा. That is what they are talking. So it's a good article to read and good to know that IIT has opened its first abroad. Who is she, lady? Yashi? She said. Who are you? First let me check. Yashi is not mentioned here. How can she say? She is saying that Nitish marks are crude, but don't insult women, really? I mean, what is this logic she is telling? Who is this person? Ever since Nitish Kumar made leading charge from the Prime Minister, who in rally, okay, क्या कहना चाह रही? The same rhetoric, more specifically, mothers and sisters, has been repeated. अच्छा, she is anti-BJP or something. Remarks, she is saying, remarks are indeed crude and rather juvenile. Juvenile matlab juvenile is like less than 17 years is a juvenile. So she is saying that they are not mature. That is what she is saying. But crassness is equally distasteful to anyone, regardless of their gender. Where does the question of insulting a woman come in? He can say, where is he insulting woman? He is only talking about the process. From the idea that the fairest too delicate to hear all this carnal, let's okay. ये है ना, ये होता है कि जब गलती हो गई है ना तो चुपचाप मान लेना चाहिए. उसको आप जितना उसको डिफेंड करेंगे ना यशी मैडम, उतना ही प्रॉब्लम होगा. What now look at what she's saying. Nitish Kumar talked of educated women asking their husbands to put out before ejaculation. What nonsense. How will the educated woman know कि now he is able to ejaculate? मतलब where will this she get an idea? I don't understand this. Stupid. To see something Puritan suggestive in this, which would definitely have been offensive, simply knows that in listeners' repressed mind and straight talks about sex is automatic dirty talk. This, of course, is related to another issue, the extreme difficulty of having a conversation in Hindi about sex without sounding like an. Don't defend this, madam. I'm so sorry. So I don't disagree. On the loose, क्या है ये? हाँ. This person is talking about another interesting personality, Mahua Mitra, was subjected to entirely unnecessarily personal questions. She is also defending Mahua Mitra. It is the oldest acting to defame a woman by throwing some totally random word because at the viral age, some of it is bound to stick. Casting character aspersions with queries boarding on innuendo about hotel bills, travel expenses. Somehow, but she has admitted, no, that I was sponsored by this person. So what is there to hide in this? I don't understand. She was very well using her, position, and she was getting tickets. She was traveling. She was getting gifts. She has all admitted all this. Attack a proverbial Vastraharan, or now she is saying कि Vastraharan हुआ. This is what the personality is.
Invited the CBI to raid her home. I invite CBI to count my pair of shoes, he said. According to accuser, Moitra received 35 pairs of shoes besides cash, jewelry. How can you do this? How can anyone in such a capacity do this? Why should you take favor? You're so well paid by government itself. That is where it goes wrong. Moitra is hardly the first politician to face. Okay, now what is this? Last year, Centre's favorite punching bag Rahul Gandhi had to bear the wrath of social media when he wore a Burberry t-shirt on the Bharat Jodo Yatra. 41,000 की टी-शर्ट अगर पहनेंगे राहुल गांधी तो प्रेस उनको क्यों नहीं क्वेश्चन करेगा? मैडम आप बताइए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम? दैट डे तो ही वाज टेलिंग आई डोंट हैव अ हाउस, तो 41,000 की टी-शर्ट खरीद रहे हैं ये ना, ये डिफेंडिंग रॉन्ग पीपल इज ऑल्सो रॉन्ग. तो ये सब है, इन चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़िएगा. यू कैन लर्न अबाउट एथिक्स कमेटी होती है कुछ, एंड देन प्रिविलेज मोशन होता है. यू माइट कम टू नो अबाउट दिस. देन करप्शन, बेसिकली करप्शन का कोई डेफिनेशन नहीं है. करप्शन कैन बी मोरल ऑल्सो. करप्शन इज़ डेफिनेटली मनी वाला तो है, मोरल भी है. आप अपनी पोजीशन का अगर मिसयूज़ कर रहे हैं, फेवर्स दे रहे हैं, ले रहे हैं, यू आर करप्ट पर्सन. वाई यू डिफेंडिंग इट? No, nothing much to do here. So that's all for the day. Do let me know about your comments on this, and we will discuss it further. Ask questions to yourself, build on your English. Whatever new word comes, build the vocab, go through it. Whatever new ideas come, do research it. Let it settle down in your mind. That's very, very essential. Thank you so much. Jai Hind.